No to war and free Palestine. इतना ज्यादा हेट मिलता है प्रियंका चोपड़ा को कुछ नहीं बोलने की वजह से। इंटरनेट पे लोग लगातार प्रियंका चोपड़ा को बोलने लगते हैं कि वो इजराइल को सपोर्ट करती है, लेकिन इन सबको शायद प्रियंका चोपड़ा की असलियत के बारे में पता नहीं। अरे नहीं भाई, तुम नहीं समझ रहे, ये प्रियंका चोपड़ा ज़ायनिस्ट है और सबसे जरूरी बात वो इंडियन है, इसीलिए देखो उसका मुंह बंद है। अभी तुम बोलोगे कि तुम धुरंधर 2 को भी बॉयकॉट नहीं करोगे, तुम लोग प्रोग्रेसिव ही हो ना, फिर इंडिया के स्टांस को कैसे सपोर्ट कर सकते हो इंटरनेट पे? ये तो अनपढ़ अंधभक्त लोगों का काम है। हमारा काम है बस इंडिया को हेट देना, इतना सा काम नहीं होता तुमसे। ये देखो, एज एन इंडियन माई सोल पर्पस इन लाइफ इज टू मेक द वर्ल्ड हेट इंडिया। हाय गाइस, लास्ट वीडियो के बाद मुझे जो लगा था वही हुआ। कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इंडिया प्लस इंटरनेट प्लस पॉजिटिविटी को एक साथ देख के, और हेटर्स का कॉन्स्टिपेशन तुमको कमेंट्स में दिख ही गया होगा। कौन है ये लोग? बाहर वाले? जी नहीं, इनमें से मैक्सिमम हमारे अपने फ्रेशली होम ग्रोन इंडियंस है। बाहर वाले तो उल्टा इनको बुद्धि दे रहे हैं अब कि अब तो ब्लाइंड हेट्रेड और नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो मेरे भाई, तुम्हारा ही घर है ये। India is hopeless. I've seen people with this mindset a lot, and I've been living in India for 8 years now. I've heard and seen many variations of this sentiment. It's surprisingly prevalent amongst young people. Like, you'd expect them to be optimistic because they are the ones who actually have the time ahead of them to change India. Let me go to SF and start a company there. Let me go to London and sarcastically post about how much I miss UPI. But you know what? India wouldn't have UPI if the people who built it had a pessimistic mindset towards their own country and left to go build somewhere else. कोई फायदा नहीं भाई, ये अभी तुमको 1000 रीजंस दे देंगे क्यों ये पॉसिबल नहीं है। ये इंडियन पेसिमिज्म वाला कीड़ा बहुत ही खतरनाक होता है। In 2022, India received $111 billion in remittances. Now, imagine if all of those people were active members in India's local economy, working for Indian companies, spending money on Indian brands. How much further ahead would India be as a nation if that was the case? A country is as hopeful or as hopeless as people believe it to be. Your mindset and the collective mindset of this nation will influence the rate at which India grows. If India believes that it's going to stagnate, it'll stagnate. And if India believes that it'll be number one, it'll be number one, because actions flow out of belief. And I choose to be in India. I choose to believe in India. अरे कौन सा इंडिया भाई? ये हेटर्स साउथ और नॉर्थ से होते हैं, ईस्ट और वेस्ट से होते हैं, एक आइडियोलॉजी से, कास्ट से, रिलीजन से होते हैं। ये है इनकी आइडेंटिटी। इंडियन आइडेंटिटी से तो इनको छुटकारा चाहिए। तुम थोड़ा सा होप और पॉजिटिविटी दे दो इनको भारत के फ्यूचर को लेके, तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं ये। अरे भाई, इंडिया का तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये वेस्ट वाले सही कहते हैं, डिलीट इंडिया। तुम सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दो, फिर भी ये हेट देने के रीजंस निकाल लेंगे। उसको कैसे फिक्स करोगे तुम? Why is it that Indians are so hated online? I mean, seriously, what is wrong with people? I recently posted this reel of my daughter doing the Indian head nod, and I got so many racist comments for this video. Now this was just a sweet video of my daughter, and yet it got so much hate online. What is with this? No, I don't get it. Why are there so many negative things and Indians are just overly hated online? Now this just got me like a little bit of a glimpse of what it must be like to be an Indian online. Honestly, Indians are some of the nicest and most caring people that I have ever met. And on behalf of other foreigners, I just wanted to say I am so sorry for all of the hatred that you guys have had to face. मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। बताओ इस जगह पे हेट देने का क्या पॉइंट है? कोई लॉजिक दिख रहा है तुमको यहाँ पे? लेकिन ये ब्राउन सी बॉयज इसको भी जस्टिफाई करने का कोई तरीका निकाल लेंगे। अरे इंडिया ने तो यही दिया है दुनिया को, बस हमसे तो और कुछ होने वाला नहीं। एज एन इंडियन, अब ये जो हेटर्स है, ये बस वो लोग नहीं जो इंटरनेट पे डिलीट इंडिया करते रहते हैं। ये वो लोग भी है जो जहां देखो वहां हगने बैठ जाते हैं, मेटाफोरिकली और लिटरली दोनों। जैसे देखो इन छछुंदरों को, एक कोरियन आदमी के रिजर्व सीट लेके बैठे थे ये, पुलिस के बोलने के बाद उठे। ये लोग नफरत बटोरने का काम करते हैं अपने देश के लिए। कम से कम इनका तो ख्याल करो।
हमारे देश में आया मैं पहली बार। अब शायद ये कोरियन आदमी अतिथि देवो भव नहीं नफरत लेके जाएगा वापस, और ये नफरत फिर वो सोशल मीडिया पे भी फैला सकता है। फिर सोशल मीडिया पे ये नफरत एम्पलीफाई होकर 10, 100, 1000 गुना बढ़ जाएगा और इनोसेंट लोगों तक पहुंच जाएगा। फिर रेसिस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाएंगे इंडिया हेट में अपना योगदान देने के लिए, और ये एक साइकिल जैसा बन जाएगा और रिपीट होता रहेगा। इसलिए इनको तभी रोकना होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंटरनेट पे कोई कुछ भी आलतू फालतू बोले इंडियंस को लेके तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। कुछ लोगों को एक बीमारी होती है सेल्फ लोडिंग की। कोई अगर कहीं लिख दे कि इंडियंस तो एलियंस से बात करते हैं इसीलिए उनके साथ रेसिज्म जस्टिफाइड है, तो ये ब्राउन सीपॉइज उसमें भी लॉजिक ढूंढेंगे और बोलेंगे हाँ मेरी नानी एलियन से बात किया करती थी इसीलिए हम मानव जाति के लिए एक खतरा है। इंडियंस को तो जुपिटर पे रहना चाहिए। फुल सपोर्ट सर। I live in Mumbai, and you know what? Yeah, trash, dirt, pollution, it is a big problem here, and it is frustrating. And I do find it particularly annoying when I see people throwing trash on the floor. And sure, civic sense is something that is lacking in some people. But I also get frustrated when I hear many people saying, India is dirty. Okay, let's talk properly. Not emotionally, not racially, let's talk historically. I grew up near London in the 1980s. 1990s. I used to visit London frequently. And anyone pretending that London was some kind of clean, civilized paradise back then is lying to themselves. It's even not perfect now. But back then, black rubbish bags piled up on the pavements, there was dog shit on the streets everywhere, graffiti on trains, walls, phone boxes, and council estates absolutely falling apart. The idea that Britain has always been clean? That is total revisionist nonsense. ऑब्वियसली हर डेवलप्ड देश को सुधारने में बनने में समय लगता है, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। Let's go further back. In the 1800s, the Thames was biologically dead, not a bit polluted, dead. In 1858, London had something called the Great Stink, so bad that Parliament literally shut down. In 1952, not ancient history, London's Great Smog killed around 12,000 people. So when exactly was this golden age of British cleanliness that people keep imagining? Here's the real difference. Britain got dirty first, then it got rich, particularly off stolen colonial wealth, and then it got clean. India is being asked to industrialize, urbanize, lift hundreds of millions out of poverty, and clean up all at the same time. Britain had 200 to 300 years to do this slowly. India has had about 75, starting from a position of poverty deliberately engineered by empire. And yes, empire matters. इसलिए मुझे इंडिया में लोगों का बिना मतलब वेस्ट को आइडलाइज करने वाला लॉजिक कभी समझ नहीं आता। भाई तुम जब दो इकोनॉमीज या देश को कंपेयर कर रहे हो प्रेजेंट डे में, तो उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना। दोनों की स्टोरी अलग है। एक लूट के बर्बाद हुआ था और दूसरे ने लूटा था अपने फायदे के लिए। 75 साल में इतना प्रोग्रेस देखने के बाद ये होपफुल नहीं होंगे आगे के लिए। ये उल्टा बोलेंगे इंडिया इज अ फेल्ड स्टेट, इसका कुछ नहीं हो सकता। India inherited broken cities, massive inequality, and zero margin for error. That's not culture, that's structural damage. London has about 9 million people. Delhi, for example, has over 30 million. You can't compare sanitation pressure and pretend that you're being serious. That's like comparing a bathtub to a swimming pool and blaming the water. And here's the bit that no one likes. Europe didn't magically become clean. It exported its dirt. Factories moved abroad. Pollution-heavy manufacturing outsourced. Plastic waste shipped to Asia and Africa. So yes, Britain may look pretty clean now because the mess happens somewhere else, out of sight, out of conscience. Also, India is not dirty everywhere. That's lazy thinking. Many Indian cities and neighborhoods today are cleaner than parts of the UK. ये बात सेल्फ लोडिंग इंडियंस को समझ नहीं आएगी ना। इन लोगों को लगता है हर जगह सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग पे चलता है। वेस्ट तो शुरू से ही डेवलप्ड है, इंडिया शुरू से ही अंडर डेवलप्ड है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और हम कुछ नहीं करेंगे इसको लेके। हम बस गाली बकते रहेंगे इंटरनेट पे। So no, India isn't dirty because Indians don't care. India has dirty areas because of extreme population density, rapid urbanization, poverty, infrastructure lag, colonial neglect. Exactly the same reasons Britain was filthy when I was growing up. The difference? Britain gets context, India gets contempt. And that's not about cleanliness. That's about power, memory, and racism. इनको समझ नहीं आता कि धीरे धीरे सब बदल रहा है, एक बार में सब नहीं होता। यहाँ जरूरत है थोड़ी होप, constructive criticism और अच्छी सोच की। People make fun of India, but did you know they built the world's largest digital payment system? They performed the fastest 5G rollout in human history, and they built a digital ID system for 1.4 billion people. Oh, and they also landed on the moon for less than the budget of a Hollywood movie. India's became the 5th largest economy in the world, overtaking the UK, its former colonial ruler. But what's even more crazy is that India is projected to become the world's 3rd largest economy, overtaking Germany and Japan by 2030. India now has the world's 3rd largest startup ecosystem, only behind the US and China, with 100 unicorns, which are $1 billion startups. India produces 2.5 million STEM graduates a year, more than the United States and Europe
Europe combined. India has also become the pharmacy of the world. They produce over 60% of the world's vaccines and 40% of the world's generic medicines. And when they landed on the moon, they landed on the moon's south pole, something NASA hasn't even done. They now have modern airports, the world's second largest highway network, and they built this cool 22-kilometer long sea bridge. So why are people still making fun of India? Because they just want to and you cannot do anything about it. अब तुम बोलोगे भाई तुम क्यों दिखा रहे हो ये सब, ये बाहर वाले बस व्यूज के लिए बोल रहे हैं. अरे वो नेगेटिव वीडियोस भी तो व्यूज के लिए ही बना रहे हैं ना. तुम क्यों चाटने पहुंच जाते हो फिर उनके कमेंट्स में? Watch this video by Singapore's ex-deputy PM. The name Singapore or Singapura was derived from Sanskrit, reflecting India's early influence in Southeast Asia. This is the kind of history that should be taught in schools, but isn't. Because why is it so surprising that India dominated Asia for over 1,000 years? And unlike the Europeans, this spread was not violent or forced. It was peaceful. This Indianization, as they call it, happened through trade, religion, philosophy, literature, art, and voluntary adoption by people who genuinely admired India. And the evidence is everywhere. In Thailand, the national epic is Ramakien, a Thai version of Ramayana. The largest Hindu temple in the world is in Cambodia. The name of Indonesia's national airlines is Garuda. The Mekong River literally derives its name from Ma Ganga. It is one of the most remarkable examples of soft power in world history. अरे लेकिन ये नैरेटिव तो गलत हो गया ना. ये हेटर लोग कैसे बिलीव करेंगे कि इंडिया को बाहर वालों ने सिविलाइज नहीं किया? हाँ, इंडिया का फिलॉसफी, साइंस, लिटरेचर ये सब बाहर से ही तो आया है हजारों सालों पहले. ये सब लॉजिक वाली बातें मत किया करो भाई इन प्रोग्रेसिव लोगों के सामने. इनको डाइजेस्ट नहीं होता. You guys remember the 1,30,000 rupee Prada sandal that looked exactly like the 300 to 5,000 rupee Kolhapuri? The uproar. Saris become draped gowns. Haldi Doodh becomes a $9 latte. Tribal embroidery gets copied without naming the tribe. And yoga becomes a luxury workout brand. We have to ask, who is getting paid? Did they credit the craft? Did they acknowledge the community? And most importantly, did they share the value? They never do that. We need to learn from history. लेकिन समस्या हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों में है, क्योंकि वो इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं चाहे तो. तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम है तुम्हारे इंटेंट में, इंडिया या वेस्ट में नहीं. तुम मन में पहले से मिस इन्फॉर्मेशन, प्रेजुडिस और इरैशनल बिलीफ्स रखोगे तो तुम जो भी देखोगे उसी लेंस से देखोगे. और ये एक बहुत लेजी अप्रोच है. तुम अपना दिमाग दौड़ाना नहीं चाहते. प्लेटर पे सर्व करके तुमको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक जगह. तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और तुम उसे क्वेश्चन नहीं करते. फिर तुम्हें मेरे जैसा कोई टेढ़ा मिल जाता है और बोलते हो अरे नहीं एक पॉजिटिव वीडियो इंडिया के बारे में 2026 में कैसे, भागो भागो यूट्यूब प्लीज इसको बैन करो. लेकिन टेढ़े लोग भी तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे. ये लोग चाटते नहीं, सच बोलते हैं. It only took you our haldi ka doodh to become turmeric latte and our chai to become chai tea lattes. Our very normal hair oiling and protective hairstyles to become coconut hair mask and sleek back buns. Our clothes were too colorful and too loud until our dupattas became Scandinavian scarves and Madras chucks got onto Ralph Lauren runways. Our kamar buns, matha pattis, nathnis had to become boho chic to be cool. Yoga became yoga and our tan skin became an exotic trend. If Indians cannot speak fluent English, it seems uneducated, but if Europeans, for example, have it broken, that's fine. Our food was always too smelly and too spice heavy until spices started being imported and now your national dish is chicken tikka. ये इतने हैवान थे, इनके आगे नाजी जर्मनी भी शर्मा जाए. 1940 में जब बंगाल में फैमाइन आया था, कैलकाटा में डेड बॉडीज ऐसे पड़ी थी जैसे मक्खी मच्छर. और जब उसकी रिपोर्ट विंस्टन चर्चिल को दी गई थी, उसने साइड में छोटा सा स्क्रिबल कर दिया था, Why hasn't गांधी डाइड येट? अगर इंडिया उनके मॉडल को फॉलो करते तो शायद उनसे 1000 गुना आगे होता हर मामले में. लेकिन दिक्कत यही है कि इंडियन कल्चर तुमको कॉलोनाइजेशन, स्लेवरी और परसिक्यूशन नहीं सिखाता. मुझे बस अंधे हेटर्स से कहना है कि अगर तुम कुछ कर सकते हो या कोई सोल्यूशन दे सकते हो तभी मुंह खोलो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा सही है, लेकिन बस मॉरल पुलिसिंग और गाली सुनाने के लिए मुंह खोलना है तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहो. इंडिया में जब तक अंधे हेटर्स है तब तक पड़ोसी, चाइना, वेस्ट इनकी जरूरत ही नहीं है नाम खराब करने के लिए. और इंडिया में हमेशा से सिविक सेंस की कमी नहीं थी और इसको बिल्कुल सुधारा जा सकता है. बस जो जैसा है उसको वैसा देखना शुरू करो. अपने इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्ट्री को लेके प्राउड रहो. So when the Greeks came to India, what did they say? They didn't say we're coming to a primitive place. For them,
And the Greeks, like Alexander, it said they thought India was a very advanced civilization. क्या डर है क्या कि कोई तुम्हें प्रोग्रेसिव लिबरल समाज में एक्सेप्टेंस नहीं देगा इंडिया के बारे में अच्छा बोलने के लिए? फिर तुम देख लो भाई, दूसरों के अप्रूवल के लिए जीना है या खुद के लिए? तुम्हारे सामने कोई आलतू फालतू कुछ भी बोले तुम्हारे देश को लेके तो जवाब दिया करो ना। From what I can see, you're brazenly racist and Islamophobic. And I'm sorry to say that we have Atiti Devo Bhava in this country where we welcome all, but your comments smack of anti-Indianism, worse still, Islamophobia, and even worse, racism, which has no place, ma'am, in today's world. पता तो करो कम से कम चल क्या रहा है कि उस अकाउंट के पीछे कौन सा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या वेस्टर्नर है। तुम हेटर्स से तो अच्छे वो लोग हैं, उनको प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच का फर्क पता है कम से कम। और बाकी लोगों को थैंक यू तुम्हारे सपोर्ट के लिए। इन हेटर्स की क्लास लेते रहो तुम लोग जब तक ये व्यूज या प्रोपेगेंडा के लिए एक पूरे देश और उसके लोगों का मजाक बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और रेसिज्म को जस्टिफाई करना बंद नहीं करते। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर Pozdrow!